ये भी बताना चाहती हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। अंत में मैं फिर से ये बात दोहराना चाहूंगी, इंडियन आर्म फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, सतर्क है और भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। धन्यवाद। जय हिंद। Several attempts were made by Pakistan on spreading a misinformation campaign, as we have seen for the last few days. There were attempts made to say that our S-400 at a northern base was destroyed, which was completely false, and that it was destroyed by a JF-17. It was a false information. Also, that the BrahMos installation was attacked and it was destroyed was false. The destruction of airfields at Srinagar, Jammu, Pathankot, Bhuj, Nalia, etc. was also a false claim. The forward ammunition dump at Chandigarh and Beas are also fit and fine, and we showed you these in the photographs in the morning briefing today. Also, there was a certain different way of miscampaign that Pakistan conducted by its press conferences, which was conducted in a manner which was completely misleading and devoid of facts. Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here, that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites, I repeat, no religious sites have been targeted by the Indian Armed Forces. Over the past few days, as we have seen, Pakistan all has suffered very heavy and unsustainable losses after it has given us an unprovoked attack on our installations. It has suffered losses in both land and air. There has been an extensive damage to the crucial Pakistani air bases like Skardu, Sargodha, Jacobabad and Bholari. In addition, a loss of AD weapon system and radars made the defense of Pakistani airspace untenable. Across the line of control, extensive and precise damage to military infrastructure and command control centers and logistics installations. In addition to that, 2 military personnel had led to complete breakdown of its defensive and offensive capability and also Pakistani morale. Sir. In conclusion, let me reiterate that whilst we will be adhering to the understanding that has been reached today, that is the Indian Army, the Indian Navy and the Indian Air Force, we remain fully prepared and ever vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every misadventure by Pakistan has been met with strength, and every future escalation will invite a decisive response. We remain fully operationally ready to launch whatever operations may be required in defense of the nation. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. ओके, तो भारत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आपने देखा नेवी, एयरफोर्स और आर्मी से एक अफसर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने आए और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से जो झूठ फैलाए जा रहे थे कि भारत को यह नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, ये सब गलत हैं। और दूसरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को जमीन पर भी और हवा में भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, जिससे पाकिस्तान ना अटैक करने की पोजीशन में था
और ना खुद को डिफेंड करने की पोजीशन में था। एक तरह से इशारा यही था कि पाकिस्तान इस 3-4 दिन की लड़ाई में इतना नुकसान खा गया, उसे इतना नुकसान हो गया कि आखिरकार उसे सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा, उसे घुटने टेकने पड़े और भारत के डीजीएमओ को फोन करना पड़ा सीज फायर का ऑफर देने के लिए। तो यह प्रेस ब्रीफिंग जो हुई है, अभी तक आप देखते थे कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह आती थी, आज कमोडोर नायर आए उनके साथ, और आप देख ही रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बताया गया कि कैसे पाकिस्तान झूठ फैला रहा था कि हिंदुस्तान